नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादा शिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। ॐ नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे नित्यानन्दाय गुरवे शिष्यसंसारहारिणे भक्तकार्येकदेहाय नमस्ते चित्सदात्मने। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्यसिद्धेश्वरपादुकाभ्यो नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यः। अहिंकारहिंकाररहस्ययुक्ता श्रींकारगूढार्थमहाविभूत्या ओंकारमर्मा प्रतिपादिनीभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। होत्राग्निहोत्राग्निहवेशहोत्रे होमादिसर्वाकृतिभासमानं यद्ब्रह्म तद्बोधवितारिणीभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। कामादिसर्पाव्रजगारुणाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां बोधाप्रदाभ्यां धृतमोक्षदाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। अनन्तसंसारसमुद्रतारा नौकायिताभ्यां स्थिरभक्तिदाभ्यां जाड्याब्धिसंशोषणबाढवाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ अस्य श्री गुरुगीतास्तोत्रमन्त्रस्य भगवान् सदाशिवऋषिः नानाविधानि छन्दांसि
श्री गुरु परमात्मा देवता हम बीजं सह शक्ति क्रोकीलकं श्री गुरु प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः अथ ध्यानम् हंसाभ्यां परिवृत्तपत्रकमलैर्दिव्यै जगत्कारणैर्विश्वोत्कीर्णमनेकदेहनिलये स्वच्छन्दमात्मेच्छया तद्योदं पदसम्भवं तु चरणं दीपाङ्कुरग्राहिणां प्रत्यक्षाक्षरविग्रहं गुरुपदं ध्यायेद्विभुं शाश्वतं सूत उवाच कैलासशिखरे रम्ये भक्तिसन्धाननायकं प्रणम्य पार्वती भक्त्या शङ्करं परिपृच्छति श्रीदेव्योवाच ॐ नमो देवदेवेश परात्पर जगद्गुरो सदाशिव महादेव गुरुदीक्षां प्रदेहि मे केन मार्गेण भो स्वामिन् देहि ब्रह्ममयो भवेत् त्वं कृपां कुरु मे स्वामिन् नमामि चरणौ तव ईश्वर उवाच मम रूपासि देवि त्वं त्वत्प्रीत्यर्थं वदाम्यहं लोकोपकारकप्रश्नो न केनापि कृतः पुरा दुर्लभं त्रिषु लोकेषु तच्छृणुष्व वदाम्यहं गुरुं विना ब्रह्म नान्यत् सत्यं सत्यं वरानने वेदशास्त्रपुराणानि इतिहासादिकानि च मन्त्रयन्त्रादिविद्याश्च स्मृतिरुच्चाटनादिकम् शैवशाक्तगमादीनि अन्यानि विविधानि च अपभ्रंशकराणिह जीवानां भ्रान्तचेतसाम् यज्ञं व्रतं तपोदानं जपं तीर्थं तथैव च गुरुतत्त्वमविज्ञाय मूढस्ते चरते जना गुरुर्बुद्ध्यात्मनो नान्यत् सत्यं सत्यं संशयः तल्लाभार्थं प्रयत्नस्तु कर्तव्यो हि मनीषिभिः गूढविद्या जगन्माया देहे चाज्ञानसम्भवा उदयो यत्प्रकाशेन गुरुशब्देन कथ्यते सर्वपापविशुद्धात्मा श्रीगुरुपादसेवनात् देहि ब्रह्म भवेद्यस्मात् त्वत्कृपार्थं वदामि ते गुरुं पादाम्बुजं स्मृत्वा जलं शिरसि धारयेत् सर्वतीर्थावगाहस्य सम्प्राप्नोति फलं नरः शोषणं पापपङ्कस्य दीपनं ज्ञानतेजसा गुरुपादोदकं सम्यक् संसारार्णवतारकम् अज्ञानमूलहरणं जन्मकर्मनिवारणं ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं गुरुपादोदकं पिबेत् गुरुपादोदकं पीत्वा गुरुरुच्चिष्टभोजनं गुरुमूर्ते सदा ध्यानं गुरुमन्त्रं सदा जपेत्
काशीक्षेत्रं तन्निवासो जाह्नवीचरणोदकम् गुरुर्विश्वेश्वरः साक्षात् तारकं ब्रह्म निश्चितम् गुरोः पादोदकं यत्तु गया सौसोक्षयो वटः तीर्थराजः प्रयागश्च गुरुमूर्त्यै नमो नमः गुरुमूर्तिं स्मरे नित्यं गुरुनाम सदा जपेत् गुरोराज्ञां प्रकुर्वीत गुरोरन्यन्यभावयेत् गुरोवक्त्रस्थितं ब्रह्म प्राप्यते तत्प्रसादतः गुरुर्ध्यानं सदा कुर्यात् कुलस्त्रीस्वपतिर्यथा स्वाश्रमं च स्वजातिं च स्वकीर्तिं पुष्टिवर्धनम् एतत् सर्वं परित्यज्य गुरुरन्यन्यभावयेत् अनन्याः चिन्तयन्तो मां सुलभं परमं पदम् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन गुरोराराधनं कुरु त्रैलोक्ये स्फुटवक्तारो देवाद्यसुरपन्नगाः गुरोवक्त्रस्थिता विद्या गुरोभक्त्या तु लभ्यते गोकारस्त्वन्धकारश्च ऋकारस्तेज उच्यते अज्ञानग्रासकं ब्रह्म गुरोरेव न संशयः गोकारः प्रथमो वर्णो मायादिगुणभासकः ऋकारो द्वितीयो ब्रह्म मायाभ्रान्तिविनाशनम् एवं गुरुपदं श्रेष्ठं देवानामपि दुर्लभम् हा हा हो हो गणश्चैव गन्धर्वैश्च प्रपूज्यते ध्रुवं तेषां च सर्वेषां नास्ति तत्त्वं गुरोः परम् आसनं शयनं वस्त्रं भूषणं वाहनादिकम् साधकेन प्रदातव्यं गुरुसन्तोषकारकम् गुरोराराधनं कार्यं स्वजीवित्वं निवेदयेत् कर्मणा मनसा वाचा नित्यमाराधयेत् गुरुं दीर्घदण्डं नमस्कृत्य निर्लज्जो गुरुसन्निधौ शरीरमिन्द्रियं प्राणान् सद्गुरुभ्यो निवेदयेत् आत्मदारादिकं सर्वं सद्गुरुभ्यो निवेदयेत् कृमिकीटाभस्मविष्ठा दुर्गन्धिमलमूत्रकं श्वेतरक्तं त्वचं मांसं वञ्चयेन्न वरानने संसारवृक्षमारूढाः पतन्तो नरकार्णवे येन चैवोद्धृताः सर्वे तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः हेतवे जगतामेव संसारार्णवसेतवे प्रभवे सर्वविद्यानां शम्भवे गुरवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः त्वं पिता त्वं च मे माता त्वं बन्धुस्त्वं च देवता संसारप्रतिबोधार्थं
तस्मै श्रीगुरवे नमः। यत्सत्येन जगत्सत्यं यत्प्रकाशेन भाति तत् यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री। यस्य स्थित्या सत्यमिदं यद्भाति भानुरूपतः प्रियं पुत्रादि यत्प्रीत्या तस्मै श्रीगुरवे नमः। येन चेतायते हीदं चित्तं चेतायते नयं जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त्यादि तस्मै श्रीगुरवे नमः। यस्य ज्ञानादिदं विश्वं न दृश्यं भिन्नभेदतः सदेकरूपरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेदशः अनन्यभावभावाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। यस्य कारणरूपस्य कार्यरूपेण भाति यत् कार्यकारणरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। नानारूपमिदं सर्वं न केनाप्यस्ति भिन्नता कार्यकारणता चैव तस्मै श्रीगुरवे नमः। यदग्निकमलद्वन्द्वं द्वन्द्वतापनिवारकं तारकं सर्वदा श्रीगुरुं प्रणमाम्यहम्। शिवे क्रुद्धे गुरुस्त्राता गुरुक्रुद्धे शिवो नहि तस्मात् सर्वप्रयत्नेन श्रीगुरुं शरणं व्रजे। वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं वाङ्मनश्चित्तगोचरं श्वेतरक्तप्रभाविन्नं शिवशक्त्यात्मकं परम्। गोकारं च गुणातीतं ऋकारं रूपवर्जितं गुणातीतस्वरूपं च यो दद्यात् स गुरुस्मृतः। आत्रिनेत्रा सर्वसाक्षी आचतुर्बाहुरच्युतः आचतुर्वदनो ब्रह्मा श्रीगुरु कथितः प्रिये। अयं मयाञ्जलिर्बद्धो दयासागरवृद्धये यदनुग्रहतो जन्तुश्चित्रसंसारमुक्तिभाक्। श्रीगुरो परमं रूपं विवेकचक्षुषोऽमृतं मन्दभाग्या न पश्यन्ति अन्धा सूर्योदयं यथा। श्रीनाथचरणद्वन्द्वं यस्यां दिशि विराजते तस्यै दिशि नमस्कुर्यात् भक्त्या प्रतिदिनं प्रिये। तस्यै दिशि सततमञ्जलिरेषार्ये प्रक्षिप्यते मुखरितौ मधुपैर्बुधैश्च। जागर्ति यत्र भगवान् गुरुचक्रवर्ती विश्वोदयप्रलयनाटकनित्यसाक्षी। श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौघं वटुकत्रयं वदयुगं दूतीक्रमं मण्डलम्। वीरान्द्वष्टचतुष्टषष्टिनवकं वीरावलिपञ्चकं श्रीमन्मालिनिमन्त्रराजसहितं वन्दे गुरुर्मण्डलम्। अव्यस्तैः सकलैः सुदीर्घमनिलैः व्याधिप्रदैः दुष्करैः
प्राणायामशतैरनेककरणैः दुःखात्मकैर्दुर्जैर् यस्मिन्नव्युदिते विनश्यति बली वायुः स्वयं तत्क्षणात् प्राप्तुं तत्सहजं स्वभावमनिशं सेवध्वमेकं गुरुम् स्वदेशिकस्यैव शरीरचिन्तनं भवेदनन्तस्य शिवस्य चिन्तनं स्वदेशिकस्यैव च नाम कीर्तनं भवेदनन्तस्य शिवस्य कीर्तनम् यत्पादरेणुकणिका कापि संसारवारिधे सेतुबन्धायते नाथं देशिकं तमुपास्महे यस्मादनुग्रहं लब्ध्वा महदज्ञानमुत्सृजे ऋगेन्द्र नमश्चाभीष्टसिद्धये पादाब्जं सर्वसंसार दावानलविनाशकं ब्रह्मरन्ध्रेषिताम्भोज मध्यस्थं चन्द्रमण्डले अकथादित्रिरेखाब्जे सहस्रदलमण्डले हंसपार्श्वत्रिकोणे च स्मरेतन्मध्यगं गुरुम् सकला भुवनसृष्टिः कल्पिता शेषपुष्टिर्निखिला निगमदृष्टिः सम्पदां व्यर्थदृष्टिः अवगुणपरिमाष्टिस्तत्पदार्थैकदृष्टिर्भवगुणपरमेष्टिर्मोक्षमार्गैकदृष्टिः सकला भुवनारङ्ग स्थापनस्तंवयश्रीः सकरुणरसवृष्टिस्तत्त्वमाला समष्टिः सकला समया सृष्टिः सच्चिदानन्ददृष्टिर्निवसतु मयि नित्यं श्रीगुरोर्दिव्यदृष्टिः अग्निशुद्धं समन्तातु ज्वालापरीचकाधिया मन्त्रराजमिमं मन्ये हर्निशं पातु मृत्युतः तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तत्समीपके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य बाह्यता अजोऽहमजरोऽहं च अनादिनिधनस्वयम् अविकारश्चिदानन्द अणीयान्महतो महान् अपूर्वाणां परं नित्यं स्वयं ज्योतिर्निरामयं विरजं परमाकाशं ध्रुवमानन्दमव्ययम् श्रुतिप्रत्यक्षमैतिह्यम् अनुमानश्चतुष्टयम् यस्य चात्मतपो वेद देशिकं च सदा स्मरेत् मननं यद्भवं कार्यं तद्वदामि महामते साधुत्वं च मया दृष्टं त्वयि तिष्ठति साम्प्रतम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः सर्वश्रुतिशिरोरजितपदाम्बुजः वेदान्ताम्बुजसूर्यो यस्तस्मै श्रीगुरवे नमः यस्य स्मरणमात्रेण ज्ञानमुत्पद्यते स्वयं
य एव सर्वसम्प्राप्तिस्तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं चैव तथा चैव चराचरं व्याप्तं येन जगत्सर्वं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ज्ञानशक्तिसमारूढः तत्त्वमालाविभूषितः भुक्तिमुक्तिप्रदाताय तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनेकजन्मसम्प्राप्त सर्वकर्मविदाहिने ज्ञानप्रभावेण तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वं ज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथ श्रीजगन्नाथो मद्गुरो श्रीजगद्गुरो ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुरादिरनादिश्च गुरुपरमदैवतं गुरुपरतरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। सप्तसागरपर्यन्तं तीर्थस्नानादिकं फलं गुरोरङ्घ्रिपयो बिन्दु सहस्रांशेन दुर्लभम्। हरौरुष्टे गुरुस्त्राता गुरोरुष्टेन कश्चन तस्मात् सर्वप्रयत्नेन श्रीगुरुं शरणं व्रजे। गुरुरेव जगत्सर्वं ब्रह्म विष्णु शिवात्मकं गुरुपरतरं नास्ति तस्मात् सम्पूजयेत् गुरुं। ज्ञानं विज्ञानसहितं लभ्यते गुरुभक्तितः गुरुपरतरं नास्ति ध्येयोऽसौ गुरुमार्गिभिः। यस्मात् परतरं नास्ति नेति नेतीति वै श्रुतिः मनसा वचसा चैव नित्यमाराधते। गुरुकृपाप्रसादेन ब्रह्म विष्णु सदाशिवा समर्था प्रभवादौ च केवलं गुरुसेवया। देवकिन्नरगन्धर्वाः पितरो यक्षचारणाः मुनयोऽपि न जानन्ति गुरुशुश्रूषणे विधिम्। महाहङ्कारगर्भेण तपोविद्यावलान्विता संसारकुहरावर्ते घटयन्त्रे यथा घटा। न मुक्ता देवगन्धर्वाः पितरो यक्षकिन्नरा ऋषया सर्वसिद्धाश्च गुरुसेवा पराङ्मुखा। ध्यानं शृणु महादेवी सर्वानन्दप्रदायकं सर्वसौख्यकरं नित्यं भुक्तिमुक्तिविदायकम्। श्रीमत्परब्रह्म गुरुं स्मरामि श्रीमत्परब्रह्म गुरुं वदामि श्रीमत्परब्रह्म गुरुं भजामि
श्रीमत्परब्रह्म गुरुं वदामि। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्मा नमाम्यहम्। हृदम्बुजे कर्णिकमध्य संस्थे सिंहासने संस्थितदिव्यमूर्तिं ध्यायेद्गुरुं चन्द्रकलाप्रकाशं चित्पुस्तकाभीष्टवरं ददानं श्वेताम्बरं श्वेतविलेपपुष्पं मुक्ताभिभूषं मुदितं द्विनेत्रं वामाङ्गपीठस्थितदिव्यशक्तिं मन्दस्थितं सान्द्रकृपानिधानम् आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्मिन् सृष्टिस्थितिध्वंस निग्रहानुग्रहात्मकं कृत्यं पञ्चविधं शाश्वत भासते तं नमाम्यहम्। प्रातः शिरसि शुक्लाब्जे द्विनेत्रं द्विभुजं गुरुं वराभययुतं शान्तं स्मरेतं नामपूर्वकम्। न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं शिवशासनता 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 इदमेव शिवं त्विदमेव शिवं त्विदमेव शिवं त्विदमेव शिवं मम शासनतो मम शासनतो मम शासनतो मम शासनकः। एवंविधं गुरुं ध्यात्वा ज्ञानमुत्पद्यते स्वयं तत्सद्गुरुप्रसादेन मुक्तोऽहमेति भावये। गुरुदर्शितमार्गेण मनःशुद्धिं तु कारयेत् अनित्यं खण्डयेत् सर्वं यत्किञ्चिदात्मगोचरम्। ज्ञेयं सर्वस्वरूपं च ज्ञानं च मन उच्यते ज्ञानं ज्ञेयं नान्यपन्था द्वितीयकः। एवं श्रुत्वा महादेवी गुरुनिन्दां करोति यः स याति नरकं घोरं यावच्चन्द्रदिवाकरौ। यावत् कल्पान्तको देहस्तावदेव गुरुं स्मरेत् गुरुलोपो न स्वच्छन्दो यदि भवेत्। हुङ्कारेण न वक्तव्यं प्राज्ञे शिष्ये कथञ्चन गुरोरग्रे न कर्तव्यम् असत्यं च कदाचन। गुरुं त्वङ्कृत्य हुङ्कृत्य गुरुं निर्जित्य वादतः अरण्ये निर्जले देशे स भवेत् ब्रह्मराक्षसः। मुनिभिपन्नगैर्वापि सुरैर्वा शापितो यदि
कालमृत्यो भयाद्वापि गुरो रक्षति पार्वती। असक्ता हि सुराद्याश्च असक्ता मुनयस्तथा गुरो शापेन ते शीघ्रं क्षयं यान्ति राजमिदं देवी गुरोरित्यक्षरद्वयं स्मृतिवेदार्थवाक्येन गुरु साक्षात् परं पदम् श्रुतिस्मृतिरविज्ञाय केवलं गुरुसेवका ते वै सन्न्यासिना प्रोक्ता इतरे वेषधारिणः नित्यं निराकारं निर्गुणं बोधयेत् परं सर्वं ब्रह्म निराभासं दीपो दीपान्तरं यथा गुरोः कृपाप्रसादेन आत्मरामं निरीक्षये अनेन गुरुमार्गेण स्वात्मज्ञानं प्रवर्तते आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तं परमात्मा स्वरूपकं स्थावरं जङ्गमं चैव प्रणमामि जगन्मया वन्देऽहं सच्चिदानन्दं भेदातीतं सदा गुरुं नित्यं पूर्णं निराकारं निर्गुणं स्वात्मयं परात्परतरं ध्येयं नित्यमानन्दकारकं हृदयाकाशमध्यस्थं शुद्धस्फटिकसन्निभं स्फटिकाप्रतिमारूपं दृश्यते दर्पणे यथा तथात्मनि चिदाकाशम् आनन्दं सोऽहमृत्युता अङ्गुष्ठमात्रपुरुषं ध्यायतश्चिन्मयं हृदि तत्र स्फुरति भावो यः शृणुतं कथयाम्यहम् अगोचरं तथा गम्यं नामरूपाविवर्जितं नित्यं स्वभावं ब्रह्म पार्वती यथा गन्धस्वभावेन कर्पूरकुसुमादिषु शीतोष्णादिस्वभावेन तथा ब्रह्म च शाश्वतं स्वयं तथा विदो भूत्वा स्थातव्यं यत्र कुत्रचित् कीटभ्रमरवत्तत्र ध्यानं भवति तादृशम् गुरुध्यानं तथा कृत्वा स्वयं ब्रह्ममयो भवेत् पिण्डे पदे तथा रूपे मुक्तो सोनात्र संशयः श्रीपार्वती उवाच पिण्डं किं नो महादेव पदं किं समुदाहृतं रूपातीतं च रूपं किम् एतदाख्याहि शङ्कर श्रीमहादेव उवाच पिण्डं कुण्डलिनी शक्ति पदं हंसमुदाहृतं रूपं बिन्दुरिते गेयं रूपातीतं निरञ्जनम् पिण्डे मुक्ता पदे मुक्ता रूपे मुक्ता वरानने रूपातीते तु ये मुक्ता स्ते मुक्ता नात्र संशयः स्वयं सर्वमयो भूत्वा परं तत्त्वं विलोकयेत् परात् परतरं नान्यत् सर्वमेतन्निरालयम्
तस्यावलोकनं प्राप्य सर्वसंगा विवर्जितः एकाकी निःस्पृहा शान्ता तिष्ठासि तत्प्रसादतः लब्धं वा तनलब्धं वा स्वल्पं वा बहुलं तथा निष्कामेनैव भोक्तव्यं सदा सन्तुष्टते सर्वज्ञपतिमृत्याहुर्देहि सर्वमयो बुधः सदानन्दः सदा शान्तो रमते यत्र कुत्रचित् यत्रैव तिष्ठते सोऽपि तदेह पुण्यभाजनः मुक्तस्य लक्षणं देवी तवाग्रे कथितं मया उपादेशस्तथा देवी गुरुमार्गेण मुक्तिदः गुरुभक्तिस्तथा ध्यानं सकलं तवकीर्तितम् अनेन यद्भवेत् कार्यं तद्वदामि महामते लोकोपकारक देवी लौकिकं तु न भावये लौकिकात् कर्मणो यान्ति ज्ञानहीना भवार्णव ज्ञानी तु भावयेत् सर्वं कर्म निष्कर्म यत्कृतम् इदं तु भक्तिभावेन पठते शृणुते यदि लिखित्वा तत्प्रदातव्यं तत्सर्वं सफलं भवेत् गुरुगीतात्मकं देवी गौतमन्त्रं भावविनाशार्थं स्वयमेव जपेत् सदा गुरुगीताक्षरैकं तु मन्त्रराजमिमं भवेत् अन्ये च विविधा मन्त्रा फलं नार्हन्ति षोडशी अनन्तफलमाप्नोति गुरुगीता जपेन तु सर्वपापप्रशमनं सर्वदारिद्र्यनाशनम् कालमृत्युभयहरं सर्वसङ्करनाशनं यक्षराक्षसभूतानां चोरव्याघ्रभयकरं महाव्याधिहरं सर्वं विभूतिसिद्धिदं भवेत् अथवा मोहनं वश्यं स्वयमेव जपेत् सदा वस्त्रासने च दारिद्र्यं पाषाणे रोगसम्भवा मेदिन्यां दुःखमाप्नोति काष्ठे भवति निष्फलम् कृष्णाजिने ज्ञानसिद्धिर्मोक्षश्रीव्याघ्रचर्मणि कुशासने ज्ञानसिद्धिः सर्वसिद्धिसुसम्बले कुशैर्वा दुर्भया देवी आसने शुभ्रकम्बले उपविश्य ततो देवी जपेदेकाग्रमानसः ध्येयं शुक्लं च शान्त्यर्थं वश्ये रक्तासनं प्रिये अभिचारे कृष्णवर्णं पीतवर्णं गणागमे उत्तरे शान्तिकामस्तु वश्ये पूर्वमुखो जपे दक्षिणे मारणं प्रोक्तं पश्चिमे च धनागमः मोहनं सर्वभूतानां वन्दमोक्षाकरं भवेत् देवराजप्रियकरं सर्वलोकवशं भवेत् सर्वेषां सम्भनकरं पुराणां च विवर्धनं
दुष्कर्मनाशनं चैव सुकर्म सिद्धिदं भवेत् असिद्धं साधयेत् कार्यं दुःस्वप्ननाशनं चैव सुस्वप्नफलदायकम् सर्वशान्तिकरं नित्यं तथा वन्द्यासु पुत्रदाम् अवैधव्यकरं श्रेणां सौभाग्यदायकं सदा आयुरारोग्यमैश्वर्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनम् मता श्रीविधवा जपान्मोक्षमवाप्नुयात् अवैधव्यं सकामातो लभते चान्यजन्मनि सर्वदुःखभयं विघ्नं नाशयेच्छापहारकम् सर्वबाधाप्रशमनं धर्मार्थकाममोक्षदं यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम् कामितस्य कामधेनो कल्पना कल्पपादपा चिन्तामणिश्चिन्तितस्य सर्वमङ्गलकारकम् जपे नित्यं मोक्षश्रियप्राप्नुयात् कामे तपेद्यो वै तस्य कामफलप्रदम् जपेक्षास्तश्च सौरश्च गाणपत्यश्च वैष्णवः शैवश्च सिद्धिदं देवी सत्यं सत्यं न संशयः अकथा कथायामि वरानने आगरे वा सरितीरे अथवा हरिहरालये शक्तिदेवालये गोष्ठे सर्वदेवालये शुभे भटे च धात्रिमूले वा मठे वृन्दावने तथा पवित्रे निर्मले स्थाने नित्यानुष्ठानतोऽपि वा निर्वेदनेन मौनेन जपमेतं समाचरे श्मशाने वयभूमौ तु वटमूलान्तिके तथा सिद्ध्यन्ति दावतरे मूले च्यूतसस्यसन्निधौ गुरुपुत्रो वरं मूर्खस्तस्य सिद्ध्यन्ति नान्यथा शुभकर्माणि सर्वाणि दीक्षाव्रततपांसि च संसारमलनाशार्थं भवपाशनिवृत्तये गुरुगीताम्भसि स्नानं सत्यं स एव च गुरु साक्षात् सदा सद्ब्रह्मवेत्तमा तस्य स्थानानि सर्वाणि पवित्राणि न संशयः सर्वशुद्धपवित्रोऽसौ स्वभावाद्यत्र तिष्ठति तत्र देवागणा सर्वे क्षेत्रे पीठे वसन्ति आसनस्थशयानो वा गच्छन्तिष्ठन् वदन्नपि अश्वारूढो गरारूढः सुप्तो जागरितोऽपि वा शुचिस्माश्च तथा ज्ञानी गुरुगीता जपेन तु तस्य दर्शनमात्रेण पुनर्जन्म न विद्यते समुद्रे च यथा तोयं क्षीरे क्षीरं घृते घृतं मिन्ने कुम्भे यथाकाशं तथात्मा परमात्मनि तथैव ज्ञानी जीवात्मा
परमात्मा निलीयते ऐक्येन रमते ज्ञानी यत्र तत्र दिवानिशम् एवं विधो महामुक्तः सर्वदा वर्तते बुधा तस्य सर्वप्रयत्नेन भावभक्तिं करोति यः सर्वसन्देहरहितो मुक्तो भवति पार्वती भुक्तिमुक्तिद्वयं तस्य जिह्वाग्रे च सरस्वती अनेन प्राणिना सर्वे गुरुगीता जपेन तु सर्वसिद्धिं प्राप्नुवन्ति भुक्तिमुक्तेन संशयः सत्यं सत्यं पुनः सत्यं धर्म्यं सांख्यं मयोदितं गुरुगीता समं नास्ति सत्यं सत्यं वरानने एको देव एकधर्म एकनिष्ठा परं तप गुरुपरतरं नान्यत् नास्ति तत्त्वम् माता धन्या पिता धन्यो धन्यो वंशः कुलं तथा धन्या च वसुधा देवी खलु भक्ति सुदुर्लभा शरीरमिन्द्रियं प्राणान् चार्ता स्वजनबान्धवा माता पिता कुलं देवी गुरुरेव न संशयः आकल्पजन्मनां कोट्या जपव्रततपक्रिया सर्वं सफलं देवी गुरुसन्तोषमात्रतः विद्या तपोबलेनैव मन्दभाग्याशये नरा गुरुसेवां न कुर्वन्ति सत्यं सत्यं वरानने विष्णु महेशाश्च देवर्षि किन्नरा सिद्धचारणयक्षाश्च अन्येऽपि मुनयो जनाः गुरुभाव परं तीर्थम् अदाङ्गुष्ठं च वर्तते जपेन जयमाप्नोति चानन्तफलमाप्नुयात् हीनकर्म त्यजन् सर्वं स्नानानि च दमानि च जपं हीनासनं हीनकर्मफलप्रदं गुरुगीतां प्रयाणे वा संग्रामे रिपुसङ्कटे जपं जयमवाप्नोति मरणे मुक्तिदायकं सर्वकर्म च सर्वत्र गुरुपुत्रस्य सिद्ध्यति इदं रहस्यं नो वाच्यं कथितं मया सुगोप्यं च प्रयाणे मम त्वं प्रीति स्वामी मुख्य गणेशादि विष्णुवादीनां च पार्वती मनसापि न सत्यं सत्यं वदाम्यहम् अतीव पक्वचित्ताय श्रद्धा भक्तियुताय च अभक्ति अभक्ते वञ्चके धूर्ते पाखण्डे नासिके नरे मनसापि न वक्तव्यं गुरुगीता कदाचन संसारसागरसमुद्धरणैकमन्त्रं ब्रह्मादिदेवमुनिपूजितसिद्धमन्त्रं
दारिद्र्यदुःखभवरोगविनाशमन्त्रं वन्दे महाभयहरं गिरिराजमन्त्रम्। इति श्रीस्कन्दपुराणे उत्तरखण्डे ईश्वरपार्वतीसंवादे गुरुगीता समाप्ता। श्रीगुरुदेवचरणार्पणमस्तु। नित्यानन्दाय गुरवे शिष्यसंसारहारिणे भक्तकार्ये कदेहाय नमस्ते चित्सदात्मने। निर्वासनं निराकाङ्क्षं सर्वदोषविवर्जितं निरालम्बं निरातङ्कं नित्यानन्दं नमाम्यहम्। निर्ममं निरहङ्कारं समलोष्टात्मकाञ्चनं समदुःखसुखं धीरम् अवधूतं नमाम्यहम्। अविनाशी नमात्मानम् एकं विज्ञाय वीतरागभयक्रोधं नित्यानन्दं नमाम्यहम्। निवो नाहमहं विचित् एवं विज्ञाय सन्तुष्टम् अवधूतं नमाम्यहम्। समस्तं कल्पनामात्रम् आत्मा मुक्ता सनातना इति विज्ञाय सन्तृप्तं नित्यानन्दं नमाम्यहम्। कर्माणं कामसङ्कल्पवर्जितं हेयोपादेयहीनं तम् अवधूतं नमाम्यहम्। स्वभावेनैव यो योगी सुखं भोगं न वाञ्छति यदृच्छालाभसन्तुष्टं नित्यानन्दं नमाम्यहम्। नैव निन्दा प्रशंसाभ्यां यस्य विक्रियते मनः आत्मक्रीडं महात्मानम् अवधूतं नमाम्यहम्। नित्यं जाग्रदवस्थायां स्वप्नवद्योपतिष्ठति निश्चिन्तं चिन्मयात्मानं नित्यानन्दं नमाम्यहम्। द्वेषं नास्ति प्रियं नास्ति नास्ति यस्याशुभाशुभम् भेदज्ञानविहीनं तम् अवधूतं नमाम्यहम्। जडं पश्यति नो यस्तु जगत् पश्यति चिन्मयम् नित्ययुक्तं गुणातीतं नित्यानन्दं नमाम्यहम्। यो हि दर्शनमात्रेण भवते भुवनत्रयम् पावनं जङ्गमं तीर्थम् अवधूतं नमाम्यहम्। सर्वपूज्यं सदा पूर्णम् अखण्डानन्दविग्रहम् स्वप्रकाशं चिदानन्दं नित्यानन्दं नमाम्यहम्। निष्कलं निष्क्रियं शान्तं निर्मलं परमामृतम् गणेशापुरिवासिनम् अवधूतं नमाम्यहम्। योगपूर्णं तपोमूर्ति प्रेमपूर्णं सुदर्शनं ज्ञानपूर्णं कृपामूर्तिं नित्यानन्दं नमाम्यहम्। दुर्जनः सज्जनो भूयात् सज्जना शान्तिमाप्नुयात् शान्तो मुच्येत बन्धेभ्यो मुक्ताश्चान्यान्
स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्याय्येन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् सर्वस्तरतु दुर्गाणि सर्वभद्राणि पश्यतु सर्वकामानवाप्नोतु सर्वत्र नन्दतु स्वस्ति मातरौत पितॄनो अस्तु स्वस्ति गोभ्यो जगति पुरुषेभ्यः विश्वां भूतां सुविदत्रं नो अस्तु योगे वदृशे मसूर्यम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः करूं सद्गुरु की करूं सद्गुरु की प्यारे गुरु वर की आरती करूं गुरु वर की आरती करूं सद्गुरु की करूं सद्गुरु की प्यारे गुरुवर के आरती करूं गुरुवर की जय गुरुदेव अमल विनाशी ज्ञान रूप तर के वासी जय गुरुदेव अमल पग पग पर देते प्रकाश जैसे किरण दिन कर के आरती करूं गुरु कर की आरती करूं सद्गुरु की करूं सद्गुरु की प्यारे गुरुवर के आरती करूं गुरुवर जब से शरण तुम्हारे आए अमृत से में केवल पाए जब से शरण तुम्हारे आए अमृत से शरण तुम्हारे क्या है छाया कल्प वृक्ष तरुवर की आरती करूं गुरुवर की आरती करूं सद्गुरु की करूं सद्गुरु की प्यार गुरुवर की आरती करूं गुरुवर ब्रह्म ज्ञान
प्रकाशक योग ज्ञान के अटल प्रवर्तक ब्रह्म ज्ञान के पूर्ण प्रकाशक योग ज्ञान के जय गुरु चरण तरो जमिटा दे व्यथा हमारे पुर के आरती करो गुरु आरती करो सदगुरु के हरे गुरु हर के आरती करो अंधकार से हमें निकालाया है हमारा उजाला अंधकार से हमें निकाला कब से जाने छान रहे थे काक सुनो दर दर के आरती करूं गुरुवर की आरती करूं सदा गुरु की गुरु की प्यारे गुरुवर की आरती करूं संशय मिटा विवेक करा भवसागर से पार लगाया संशय मिटा विवेक कराया भवसागर से पार लगाया अमर प्रदीप जला कर कर दे निशा दूर सतन के आरती करूं गुरुवर की आरती करूं सदगुरु की करूं सदगुरु की प्यारे गुरुवर के आरती बताया आवागमन विमुक्त करा वेदों बीच वेद बता आवागमन विमुक्त करा धन्य हुए हम पाकर धारा ब्रह्म ज्ञान ने डर के आरती करूं आरती करूं सदगुरु की सदगुरु की प्यारे आरती करूं करो कृपा सद्गुरु जगता रन सतपथ दर्शक भ्राति निवारण करो कृपा सद्गुरु जगता जय नित्य ज्योति कलाने वाले लीला धर के आरती करूं गुरुवर की आरती करूं सद्गुरु की सद्गुरु की प्यारे गुरुवर की
शक्तिपातके दिव्यप्रदान मुक्तानन्द सद्गुरु दाता शक्तिपातके दिव्यप्रदाता कर के वास गणेश पुरे भव बाधा हरले जन के आरती करूं गुरु आरती करूं सद्गुरु की करूं सद्गुरु के प्यारे गुरुवर के आरती शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दु कलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरुनाथ
Shiva Sadhgurunad Maharaj Ki Jai. Good morning, everyone, and welcome to Satsang, Satsang, and more Satsang. So, for all of us here, that is the foundation, that is our lifestyle here.
And I wanted to share a couple of things. So the first one is, recently I just came back from an annual family vacation, and it was in Los Cabos in Mexico, where it's nice and warm and sunny, but there's climate change going on there too as well. So there was a few colder days than normal. But one of my favorite things to do when I'm down there is every morning, my sister and I, we go to the beach and we sit there and we watch the sunrise. We have our cup of coffee there, we watch the sunrise, and it's just absolutely glorious. But the thing that is always the most heartfelt and something that I always cherish is that we always have conversations. So our conversations, of course, are always about Baba. They're always about the path. There's new words that become our favorite words that we talk about. So whether it's bhavana, which is attitude and feeling, whether it's sarve, about all, thinking about all, whether it's about guru, whether it's about family, whether it's about any different aspect of it. And we also use that same time to process within ourselves. So it's always like a processing time. It's like a reflection time. It's like always taking stock and inventory of where we are now, a few months later. And this has been our pattern for many, many years. So since childhood, actually. So whenever we see each other, it's always very enriching and it's always a very special time. But what I wanted to say was, so this time, the nature of our conversations, what we both kept talking about was how grateful we were for our yogic lifestyle, how grateful we were for the presence of the Guru, how grateful we were for, with all of these ever-changing times, everything moving so fast, being around the youth and seeing where everything is headed, the AI, the artificial intelligence, just how everything is changing day by day, week by week, month by month, and every time we turn around, it's something major. It's not just a little, it's not like a little ripple. It's something more significant. And as we were talking about that, we kept saying the only thing that we really want to maintain, sustain, is peace. That becomes our one like so intensified like jewel, gift, bestowal, is that we are carrying this peace and that we are feeling this peace at all times. So when we think of our yogic lifestyle and all the yogic tools, all the tools that we've been given, we come to satsang. It's not like counting how many times we've been to satsang. It's none of that. It's the continuation of this process. And so when we come to satsang, we are always, always seeking to uplift the mind, to raise the frequency of the mind, become aware of the thoughts in the mind, become aware of the content that passes through the mind, the content that gets sometimes stored in the mind for a period of time, but it's always about trying to eliminate and remove and dissolve and delete that which we don't need and that which is not uplifting. So there's a lot of emphasis, and I've always respected this and loved this, and so much reverence for all of Gurudev's talks, all of Baba's talks, all of the teachers who teach here, because their aim every single time throughout the week is creating talks and creating vehicles and creating pathways for all of us so that we can use this knowledge to change the way the mind operates. So talking about peace, every time when I pick up my chanting book, there's 2 quotes in there that I have taped to the front of the book. So I was just going to read both of those before we move on to Baba's talk. So the first one is a quote from Ramana Maharshi, and it says, "The transcendental awareness I speak of is the natural state, sahaja samadhi, for here
you are naturally poised. You remain calm and composed even while you are active. You realize that you are moved by the deeper real self within. You have no worries, no anxieties, no cares. Here you realize there is nothing belonging to you. The ego, everything is done by something with which you get into conscious union. And then one quote of Gurudev's that says, "We do not just sit and meditate, but we also must carry stillness of mind at all times. Then we can say that meditation has borne fruit." So when we watch these videos, which we're going to be doing here shortly, these videos of Baba, the videos of Gurudev, again, all we're doing while we sit here is just allowing our minds to bathe in that presence, settle down, be comforted by their words, be comforted by their transmission, and see where that settles for us. So if the mind is really active and we start watching them, hearing them, listening to them, the content of what they speak about naturally takes us to that place. It takes us to the residence of the self. So they're really, really, again, I can't say it more specifically, but they are really the greatest tools that we have. And if we just open our hearts, open our minds, allow the body to be relaxed, find a comfortable posture, and just open those inner realms to hear, to feel, to experience what they have to say, it is so, so beneficial. It's beneficial for everyone. It's not just beneficial for those of us here, those of us listening, but then what happens is because we become in touch with that, then we become carriers of that peace, carriers of that change, carriers of that joy and that self that Baba talks so beautifully about. So what we're going to be doing now is we have a series of Baba speaking at the evening programs on his last tour of the Pratyabhigna Hridayam. So today we're going to be watching the second part. I think we have in total, I think it's 4 parts, or 5, 6. We're just going to keep on going. We're going to, every month we're going to hear another one, and another one. So again, and the beauty of continuation, it's not coming with an exclamation mark at a full stop. It's not coming as a period. It's like, this is like a continual inner conversation, an inner journey, our sadhana that we're fueling with all of these beautiful practices. So everyone's welcome to settle in. And you can close your eyes and watch the video. You can open your eyes and watch the video. The video is about 45 to 48 minutes. So we'll enjoy that as prasad and darshan of Baba. And then after that, we will have a short chant, a short kirtan, and then we'll conclude as we always do on Sundays with our bhog, our food offering, our prasad offering, lunch offering, and Danya Danya and Joda Se Joda, and a couple of announcements. So thank you all for your presence here, and enjoy the video. Sadgurunad Maharaj Ki Jai.
सबका बड़े सम्मान के साथ प्रेम से हार्दिक स्वागत। With great respect and love, I welcome you all with all my heart. तो उनका भी जिसमें बहुत बहुत है, This गांजा contains a lot. है, कोकीन है और भी कुछ है, ये भी है उसके साथ। There's marijuana, cocaine, and this too. ये बड़े अच्छा त्याग दिया, अच्छा हो गया। ये जेर है, अच्छा नहीं, अमृत नहीं। Could you have given up that magazine and smoking all those different kinds of things? I welcome you too. मगर उसका बदले परमात्मा का रसा बहुत स्ट्रांग और बहुत कड़क चढ़ने वाले वो पीना चाहिए मनुष्य। The nectar of God is the highest intoxication. You really get high on that. So you should learn how to imbibe that nectar. मनुष्य अपने को आप नहीं जानते हुआ, अपने शक्ति को आप परिचय न लेते हुआ, अपना अंदर का जो महान नशा है उसी नशे को न पीते हुआ ये दुर्दशा को भोगना पड़ता। Because you don't know your own self, because you do not recognize your own Shakti, your own energy, because you don't get high on your own inner self and that nectar of God, that you find yourself in this predicament, you have to follow these things. यदि एक बार परमात्मा के नशे को पा लिया, परमात्मा को देख लिया, उससे दोस्ती कर लिया, फिर सब भूसा जैसा लगता है, वो चावल का जो छिलट है, फिर वैसा लगेगी। If you attain God's intoxication, if you see Him, if you get high on His nectar, then all this thing will taste like husks, really tastes like dry grass. ऐसा लगेगा। हाँ, मनुष्य बाहर 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 होके बाहर ही चले जाता, अंदर के भी आता नहीं। You turn only outside and you just continue to do that outside, outside and outside, and you never turn within, you never come back. रोज 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 ये लोग नवा लोग भी रोज रोज आते हैं, जुन्ना लोग के लिए आदत पड़ता, नवा लोग के लिए एक ऐसा समस्या होता, ये उठते बैठते सद्गुरुनाथ महाराज की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय ऐसा बोलते रहते। Every night we have more and more newcomers. Of course, the old-timers get used to everything that happens here, but sometimes the newcomers wonder, why do these people always say Sadgurunath Maharaj ki jai as they stand up, as they sit down, as they do this or that? और कई का सिर उठ सकता, कई को जरा अपसेट हो सकता, कई के लिए कुछ अंतर का भावना में कुछ चाहिए, ऐसा धक्का लगा जैसा भी लगेगा, और कई को खुशी भी होएगा इसमें। Some people may get a headache by listening to this so many times. Some people may get very upset. Some people may feel very shocked within. On the other hand, some people may find themselves in bliss when they hear this. परंतु एक मनुष्य की रुचि का प्रतीक है ये। Whenever a person does something, it shows that he's interested in it. मेरे को कई लोग इधर बता, बाबा ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये मेरा गर्लफ्रेंड है। Many people tell me, Baba, this is my boyfriend. Baba, this is my girlfriend. कभी कभी बाबा ये मेरा गर्लफ्रेंड। Sometimes they have the pictures and they say, Baba, this is my girlfriend. ठीक है, उनका रुचि। It's okay because it is their interest. उनमें रुचि हो या ना हो, मगर उसको रुचि है। Whether there is true interest in them or not, the person who is introducing those pictures have an interest in them. ऐसा ये गुरु वाले भी सद्गुरु महाराज की जय 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 करके अपना रुचि बताते, जिसको अरुचि है उसके लिए डोका उठने का बात है, मगर संभाल लो। In the same way, people who have a guru, they're interested in their guru. They continually hail their guru by saying Sadgurunath Maharaj ki jai. So some people may get a headache. Just take care of yourself. आज बुधवार है। It is Wednesday. बुधवार दर्शन शास्त्र। Every Wednesday night, I have been speaking on this particular philosophy. प्रत्यभिज्ञ दर्शन, दर्शन है यानी दर्शन उसको बोलते हैं प्रकट दिखाने वाला, ऐसा उसका अर्थ। And this one is called the Pratyabhijna Hrudayam. And philosophy is called Darshana in our language. And Darshana means the vision. You really see that right away. ये खास परमात्मा ने लिखा हुआ, मानुष्य लोग पढ़ा हुआ, वो लोग मान्यता दिया हुआ। ये ऐसा नहीं कि किसी ने भी उल्टा
जैसे एक प्रोफेसर बनने के लिए एक बुक लिखना ही चाहिए, फिर कैसा भी हो इतना बड़े एक लिखना ही चाहिए, वो अच्छा हो या ऐसा लिखा हुआ बुक नहीं। This philosophy was founded by the Lord प्रोफेसर Himself, है स्वामी जी, and the sages ये also followed this philosophy, and they really studied it. एक So बुक this लिखना ही पड़ता philosophy is completely authentic. It's not that they had to write this book to become well known. So sometimes, if you want to become a professor, you have to write a big book, and then it doesn't matter if that book is good or bad. You just have to write a big book before you are considered as a professor. Well, we have some of the Swamis as professors here and there. एक बार जर्मनी का एक पिला प्रोफेसर होने वाला मनुष्य हमको मिलने का आया था हमारे आश्रम में। Once a German who was going to become a professor came to see me in the ashram. और उसको निर्विकल्प के ऊपर योग और सविकल्प निर्विकल्प समाधि के ऊपर पुस्तक लिख के प्रोफेसर बनने के पास होना था। To become a professor, he had to write on yoga, nirvikalpa and savikalpa. तो हम कहा कि मिला आपसे काम के लिए मैं आया हूँ। He came and met me and he said, I've come to you with some purpose. हमने क्या बात है? I asked, what is it? मैं प्रोफेसर के लिए बुक लिख रहा हूँ। He said, to become a professor, I'm writing this book. और योग और सविकल्प और निर्विकल्प समाधि के बारे में। It is on yoga and it's about निर्विकल्प। nirvikalpa samadhi. मैं बोला सविकल्प समाधि के बारे में जानता तो ऐसा पूछा। Now he said he wanted to write about nirvikalpa samadhi, so I asked him, do you know anything about savikalpa samadhi? नहीं बोले। He said, no. फिर निर्विकल्प क्या पूछता हमारे से? I said, then या 15 को समझता नहीं वो 16 को पूछ रहे। I said, then what are you asking me about nirvikalpa? If you don't know the number 15, how can you know the number 16? ऐसा ऐसा प्रोफेसर लोग का पुस्तक। So the professors write books like this. बोला कितना दिन रहेगा बोला तू? I asked him, for how long will you stay here? टाइम नहीं बोले हमको 1 घंटे के। He said, I hardly have any time, just 1 hour. अरे तोता रामकृष्ण का जो गुरु था तोतापुरी रामकृष्ण परमहंस का, उसको 32 वर्ष लगा निर्विकल्प का अभ्यास करने को, तेरे को आधे घंटे के अंदर बुक लिखने के क्या चेष्टा करता, तुम भोजन करके जाओ बोला। Ramakrishna's guru was Totapuri. It took him 32 years to practice nirvikalpa samadhi and actually to get into that state. And I said, you want to write a book about it within a half an hour? I said, well, you can have lunch and leave. ऐसे दर्शन नहीं, ये दर्शन महर्षियों का है। Anyhow, this philosophy is not founded by such people. Darshan This philosophy was founded by great sages and the Lord. दर्शन करता हुआ है देखा हुआ। So darshana means the one that you have seen. और जिसको पूरा देखा हुआ उसका नाम दर्शन। So darshan is that which you have actually seen with इस your own दर्शन eyes. में सिर्फ कितना शब्द है? 20 शब्द है। And this philosophy contains only 20 aphorisms. 20 शब्द। आज एक शब्द बोलने वाले हैं मैं। So tonight I'm going to speak on one of those aphorisms. परंतु जिसमें जुड़ना है, जो पढ़ा है, उसका लिए कुछ समझने में खुशी होएगा, रुचि होएगा, उसका लिए बहुत अच्छा होएगा। जिसने जिस दर्शन का नाम ही सुना नहीं, उसके लिए थोड़ा कंटाल भी आएगा, जो तो समाधि जैसा निद्रा भी आ जाएगा। The old timers who have read this work, who have studied it, who have heard it for a while now, would actually enjoy listening to this. But newcomers who haven't heard this at all may feel slightly bored or kind of dozing off. क्योंकि दर्शन शास्त्र बहुत सूक्ष्म और गहन होता। Because a darshana, a philosophy, is subtle and unfathomable. क्योंकि वो दर्शन ही कराता परमात्मा का, ऐसा उसका नाम, इसीलिए उसका नाम दर्शन। It is called darshana because when you really get into it, it really gives you the vision of God. For this reason, it is called the आज darshana. 9वां सूत्र है, 9वां शब्द। Tonight I am speaking on the 9th aphorism. बहुत थोड़ा सा छोटा शब्द है। It's a very short aphorism. चिद्वत् चिद्वत् शक्ति संकोचात मलावृत संसारी, ये 9वां शब्द है उसका दर्शन का। चिद्वत् शक्ति
संकोचात मलावृता संसारी। जो चिति है वो जिति अपना शक्ति को संकोच कर मलावृत बन के संसारी बनता बोलकर। इसका अर्थ है कि सतत हम बोलते रहता हूँ कि परमात्मा का व्याप्ति है और परमात्मा का जगह है, जगत में परमात्मा है और परमात्मा के विलास है और वो पूर्ण ही है और वो निसंशय है, ऐसा हम बोलते रहता हूँ। The meaning of this aphorism is consciousness, chitti, contracts itself and then it becomes enveloped by impurities and it's called samsari. It is called a transmigrating soul or a worldly being. Now, I always say that God is everywhere. Now, God is in this world. This world is the play of God, and God actually exists everywhere, and it is His sport, and He's nisamsari. He's not a transmigrating soul. ऐसे जो परमात्मा, जो परम शुद्ध, महान शक्तिवान, सर्वेश्वरा और वो सर्वशक्ति युक्ता, वो एक जीव जैसा कैसा संसारी बन गया? God is so pure. He is omnipotent. He is omniscient. Then how has he become a transmigrating soul, a samsari? आत्मा का ऐश्वर्य तो महान है। The glory of the self is sublime. उसको मलावृता अणु का कहना कैसा संभव है? ऐसा एक शब्द प्रश्न है इसका। So how can you call the self limited and enveloped by impurities? इसको संसारी कहने के लिए कुछ कारण है। There must be a reason why it is called a samsari, a ये transmigrating soul. आत्मा कुछ संसारी बना नहीं। The self hasn't actually become the आत्मा samsari. कुछ पाप पुण्य का भोक्ता होता नहीं। The self is not the experiencer of virtues and sins. आत्मा सतत शुद्ध का शुद्ध ही है। The self is always pure. परंतु जब चित्त आत्मा का शक्ति से संकुचित हो जाता है तब वह मलावृत संसारी कहलाता है। जब ये आत्मा चित्त द्वारा मिलकर चित्त का शक्ति संकोच होके चित्त संसार रूप में अपने को क्षीण कर लेता तब संसारी ऐसा कहलाता है। When consciousness contracts itself and loses the power of the self by becoming the mind, it is the mind which is called sansari. यदि आँखी वाला मनुष्य आँखी को ऐसा मिटा लिए तो आँखी मिटा के जैसा अंधा जैसा बन जाता, अंधा कहलाता, ऐसा ही ये माला संकोच होके संसारी कहलाता। Even if you have the physical eyes, if you close them and just play around, then you're still called a blind person because you cannot see anything. In the same way, consciousness contracts itself. When it contracts itself, it is enveloped by impurities and it's called a sansari. वस्तुतः ये जिसने बोला वो कहाँ से बोला वही स्टेशन से अपने को सुनने, स्टेशन बदलने से सुनने के लिए बड़ा कठिन है। Now, you have to understand that if you really want to listen to this philosophy, then you have to be in the same state from where the Lord wrote it from which state He wrote it from. If you're not in the same state, then you can't really get it. वो 11 चैनल का 13 चैनल में सुनने को नहीं आएगा। Now, for example, if you're listening to the 11th channel, and if you want to listen to something which is in the 13th channel, you're not going to find it in the 11th channel. हाँ, वैसे ही सुनना पड़ता वही चैनल में। So you have to be in the same channel. जब परमेश्वर चिदात्मा अपने स्वतंत्र स्वइच्छ से अभेद व्याप्ति को छोड़कर When God, the self of consciousness, through His own willpower, gives up His all-pervasive ये unity, जगत रूप बनने के लिए वेद व्याप्ति को प्राप्त हो जाता हो, to become this world, He accepts duality. तब उसका इच्छा शक्ति संकुचित अपने आप कुछ होता। एक बड़ा आदमी बड़ापना को छोड़ के छोटापना का छोटे होने को देखे तो उसका शक्ति भी छोटा ही हो जाता, संकुचित हो जाता। At that point,
his Icha Shakti, his power of will is contracted. Now you can see this even in the mundane life. If there is a big person who has a big status, if he gives up that status and comes down from that status, once again he becomes an ordinary person. वो सदा परमात्मा अनंत शक्तिवान मान दिव्य शक्ति है उनका. God has infinite powers. He has so many powers. उनका शक्ति में कोई तारतम्य न्यूनाधिकता नहीं है. And his powers are all the same. It isn't that some powers are stronger and some powers are not. ऐसे होने पर भी शक्ति संकोच जैसा उसको भासता. Yet it appears that Shakti has contracted itself. उसी समय वो मलावृत संसारी ऐसा कहा जाता. When it appears that his power is contracted, he is called the self enveloped by the impurities. शैवजम में ये परमात्मा को ढकने के लिए तीन मल को माना गया. ये तीन मल द्वारा वो ढक जाता. Shaivism explains the three malas, the three impurities which cover the self, which conceal the self from us. अणव मला, माया मला और कार्मिक मला, ऐसा त्रि मला से ये ढक जाने से, जैसा हमारे शरीर ये को तीन है, 1 2 और 3 में ढका है उसका अंदर शरीर. ऐसा त्रिमला से ढका हुआ होता है. These three malas have their own names: Anava mala, Maya mala, and Karmika mala. And you can look at my body, and I'm within these three layers. He said it. तथा च अप्रतिहता स्वातंत्र्य रूप इच्छाशक्ति संकुचिता सती अपूर्ण मन्यता रूपम अनवमलम. इसी रीति से अप्रहता स्वतंत्र रूपा इच्छा शक्ति परमात्मा का संकुचित हो जाने पर वो अनवमल बन जाता. अनवमल कहलाता. When the unconditioned willpower of God contracts itself, it is called the Anava Mala. अपूर्णता का बोध है, अनवमल है. मैं देह हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं इतना ही हूँ, ऐसा जो हम अपने को ज्ञान हुआ है, बोध होते है, ये अनवमल है. अनवमल का लक्षण है. To have the awareness of imperfection, say, I'm this body, I'm so small, I'm so tiny, his experience of the Anava Mala. मल यानी जैसा स्नान ना किया हुआ मनुष्य का शरीर में मल लग जाता, मैला, ऐसा मैल है. साबुन डाके दूध तो स्वच्छ हो जाता. ऐसा ये दर्शन का साबुन से दूध डालने से फिर स्वच्छ हो जाता, फिर मल निकल जाता. The literal meaning of mala is filth. Now, just as sometimes you're covered with filth, and when you use soap, when you take a shower, then you wash the filth off your body, once again you become clean. Similarly, if you use the soap of philosophy, then all these subtle impurities, the subtle filth is cleared away, washed away. ये अनवमल है. So the feeling of imperfection is the Anava Mala. ज्ञान शक्ति क्रमेण संकोचात् वेदा सर्वज्ञत्वस्य किंचिज्ञत्वेन अंतःकरण बुद्धिन्द्रिया तापत्ति पूर्व अत्यंत संकोच ग्रहणात् भिन्नमेवाद्याप्तता रूपम मायामलम. दूसरा मायामय. The second one is Maya Mala. मायामल वो है ज्ञान शक्ति का क्रम से संकोच होने का कारण. परमात्मा को जो ज्ञान शक्ति है दी वह पंच शक्ति का परमात्मा. When the power to know is contracted, Maya Mala comes into existence. It is said that God has 5 powers. पंच कृत्यशील परमात्मा है, पंच शक्तिशील परमात्मा है. एक तो पंच कृत्य है उसका 5 कर्म, और एक पंचाशक्ति है. पंचशक्ति से पंचकृत्य को करके ये जगन नाटकों को नचाते रहता हूँ. He performs 5 actions with his 5 powers. So in this way, he makes the drama of the world continue. इच्छा, कौन पंचशक्ति? इच्छा, ज्ञान, क्रिया. इच्छा का साथ आनंद आना चाहिए.
इच्छा आनंद क्रिया चित आनंद इच्छा क्रिया ज्ञान। ओ लाइन छोड़ना नहीं चाहिए, शब्द कुछ नीचे ऊपर नीचे ऊपर। तो हम तो सही ठीक है, अपन बुढ़ा आदमी अब भूल जाता, पढ़ने वाला ऐसा नहीं होना चाहिए। ज्ञान शक्ति का क्रम से संकोच होने का कारण। So the 5 powers are Chit, Ananda, Ichha, Jnana and Kriya. और वेद में सर्वज्ञता अल्पज्ञता के रूप में परिणित होने से When the power to know is contracted, the unity awareness becomes the dual awareness. ये माया मल बनता, And then it becomes Maya Mala. इसका प्रारंभ अंतःकरण तथा ज्ञान प्रभाव अंतःकरण तथा ज्ञानेंद्रिय के साथ होता। When these malas come into existence, they contract a soul and they go into the psychic instruments and the senses. और ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय के साथ मिलकर स्वस्वरूप संकोच को कारण वेद्य का भिन्न रूप से प्रतन इसका स्वरूप है। एक वस्तु को भिन्न रूप करके देखना इसका ये स्वभाव है। With the psychic instruments and the senses, this mala makes a person see differences. वो वेद से अत्यंत परिमित हो जाने से वो कर्ममल बन जाता, मायामल बन जाता। So when there is this dualistic awareness, it's called the Maya Mala. वो माया मला के हम लोग को देह मैं शरीर मैं इंद्रिय द्वारा बचने वाला, आँखी से देखने वाला, मुंह से खाने वाला, जीव से बोलने वाला, इतने ही मेरा आकृति है, इतने ही मेरा समझ, ऐसा वो समझ कर देता। Because of the Maya Mala, a person creates differences in everything. And about himself, he talks in this way. Well, I have eyes, only through the eyes I can see. Now I eat food through my mouth, and I do this with these senses, I do that with the other senses. So he has this feeling of separation in every part of his body. क्रिया शक्ति क्रमेण वेद सर्वकृतत्वस्य किंचित कर्तृत्व रूपेण कर्मादि च रूप संकोच ग्रहण पूर्व अत्यंत परिमिताता प्राप्त शुभाशुभानुष्ठानमयम कर्ममलम। अतिशय एक कर्ममल है, एक माया मल हो गया, एक कर्ममल। The third one is Karma Mala. I already talked to you about the Maya Mala. वेद से क्रिया शक्ति को क्रम से अत्यंत परिमित हो जाने से कर्ममल बन जाता। So when there's this dualistic awareness, you perform actions with the same kind of awareness, then this limited awareness of action is called the Karma Mala. क्रिया शक्ति क्रम से भिन्न होके सर्व कर्तृत्व रूप जो आत्मा है वो किंचित कर्तृत्व बन के कर्मेंद्रिय रूप से। In this, the Kriya Shakti is contracted. The power to act is contracted. Actually, the self is omnipotent, but that power is limited. अत्यंत परिमित स्थिति को प्राप्त होके परिमित स्थिति को प्राप्त होके पुण्य पापों को आचरण करने वाला कार्मिक मल बन जाता। Then the self constricts itself into the psychic instruments and the organs of action, and because of this extreme limitation of actions, it's called the karma mala. हाँ, जरा आँखी दिखने से कम होने से अंधा बन गया। If the eyes can't see, then you become blind. और कान सुनने से कम होने से बहिरा बन गया। The ears cannot hear, then you become deaf. और चलन वलन कम होने से लंगड़ा बन गया। ऐसा तीन मल से एक अच्छा आदमी, एक अच्छा आत्मा इस दशा को प्राप्त होता। If you cannot walk properly, then you become lame. In the same way, just as although you are a very nice person, but if you don't have these senses, then you're called handicapped. In the same way, although the self is completely great and is great in its true nature, because of these three impurities, it becomes limited. इसका नाम प्रत्यभिज्ञा है, बहुत छोटा है, इधर मिलता। इसको अमनुष्य अवश्य पढ़ना जीवन में एक बहुत होता। एक दो चार बार पढ़ने से फिर हम क्या बोलता ये समझ में भी आएगा। This philosophy is called the Pratyabhijna Hrudayam. If you find it very difficult to
follow it, then you can get the book and read it. And this book is very small, and it contains very few aphorisms. If you read it only 3 or 4 times, you'll actually understand what I'm speaking about. अरे 22 शब्द थे उसमें, 20 शब्द है. And there are only 20 aphorisms. अस्तु. इस प्रकार सत्स्वरूप धर्म सर्वकर्तृत्व, सर्वज्ञत्व, पूर्णत्व, नित्यत्व, व्यापकत्व शक्तियों से संकुचित होके. So the self, which has all the universal powers, such as omnipotence, omniscience, the eternal existence, the power of perfection, नित्यत्व, कर्तृत्व, व्यापकत्व और सर्वज्ञत्व. omniscience and omnipotence, eternal existence, and the power of all pervasiveness. इस मनुष्य में सभी शक्ति है. So the self has all these powers. एक सर्वकर्तृत्व, चाहे जैसा करने का. It has the power of omnipotence, which means it can do anything. दूसरा सर्वज्ञता, टेलीफोन का भी जरूर नहीं, रेडियो का भी जरूर नहीं, चाहे जो जानने का. It has the power of omniscience. You don't need a telephone, you don't have to watch the television. It knows everything. तीसरा पूर्णता का, अभी तो अल्पज्ञता, अभी तो कुर्सी में चाहिए तो समझता हूँ, पीछे नहीं. पूर्णत्व का, पूर्व पश्चिम उत्तर से दक्षिण, ये पूर्णत्व. It has the power of perfection, and it is everywhere. Right now I experience that. I'm sitting only on this chair, which is limited to this space, but the self experiences that perfection. It is everywhere, from the north to the south, from the east to the west. चतुर्थ नित्यत्व, अभी हमारे नित्यत्व नहीं. क्यों? हम 10 बरस का पहले नहीं था और 50 बरस का पीछे नहीं रहता. ऐसा नहीं, सतत रहने वाला नित्यत्व. It has the power of eternal existence, and it's not like our limited understanding. For example, a person did not exist 10 years ago, but he would continue to exist for 50 more years, but then he would not exist. So that is not nityatva, that is not eternal existence. पांचों व्यापकत्व, सर्वव्यापकत्व, जहाँ भी चाहिए वहाँ हम. The fifth one is the power of all pervasiveness. That means that exists everywhere, in every place. वो ब्रह्मानंद कह देता, जिधर को देखो, जहाँ को देखो, तू एक मुझको दिखा रहा है, तू एक मुझको दिखा रहा है. जिसको बोलते सर्वव्यापकत्व. जिधर को देखो, जहाँ को देखो, तू एक तो मुझको दिख रहे, बोले और कुछ है ही नहीं. A great saint, Brahmananda, said, "O God, wherever I look, wherever I turn, I see only you. I see the bliss of the Absolute." ये शक्तियाँ संकुचित होने से ये मल बन जाते. When these universal powers are limited, they become the malas. और अपने स्वरूप को क्षीण कर देता. They bring down you from your true nature. और वो पंच रूप, पहले जो सर्वज्ञत्व है, सर्वशक्तित्व है, सर्वव्यापकत्व है, वो जो शक्ति हो उल्टा रूप, उलट बन जाता. I talked to you about the universal powers, omniscience, omnipotence, and all pervasiveness, and so on. Now these powers are totally वो contracted. पंच शक्तियाँ काला, विद्या, रागा, कला, नियति, ऐसा 5 बन जाता. When these 5 universal powers are limited, they become the limited powers. काला, विद्या, रागा, कला, नियति, ऐसा पंच शक्ति बन जाता. So they have these names, they become limited. पंच शक्ति बन जाने से वो पूर्व पंच शक्ति के कार्य से विरुद्ध कार्य कर देता. So when they become these limited powers, instead of doing the same work, they are the universal powers that they do something else, very limited. कला उसको बोलते कर्तृत्व या साधकता का संकोच अथवा परिचिन्नता, एक कला है. Now kala is the limitation of omnipotence. Now there is a break, there is no continuation. कर्तृत्व का अकर्तृत्व बन जाना, कला.
So there is a limitation in omnipotence. विद्या उसको बोलते हैं ज्ञातृत्व हुआ संकोच अथवा ज्ञान का परिचिन्न अथवा जिसी के कारण सदा भिन्न भिन्न विषयों को चाह बनी रहना, ये विद्या है. In Vidya, there is a limitation of omniscience. There is the feeling of contraction, there's the feeling of limitation, and there's always the feeling of lacking something, that you have to know something more, you have to know something more all the time. राग उसका नाम है तृप्ति के संकोच अथवा परिचिन्नत्व, जिसके कारण सदा भिन्न भिन्न विषयों का चाह बने रहना हृदय में. Raga, हाँ, जो निर्छा चाह वाला चाह बने रहना, आशा बने रहना, is the limitation of want. Now you're always having a desire. You always want something. Instead of having that fulfillment, there's lack of fulfillment. काल उसका नाम है नियम का संकोच, जिसके कारण भूता भविष्य वर्तमान और भविष्यों में अलग अलग बोध होते रहना, उसका नाम काला. ये कभी हो जाए, अभी 10 बरस के बाद कैसा होएगा. लोग बोलते हैं 3 बरस के बाद लॉस एंजल बुढ़ने वाले सच्ची काम कैसा पत्र लिखते गुप्त लोग. सच बोल दो बाबा, नहीं तो हम लोग दूसरे ठिकान बंगले लेंगे बोल. Now kala is the limitation of time, limitation of that eternal existence. And kala, this limited power, creates the idea of past, present and future. Now then people always start wondering what's going to happen in 10 years. Just as people here are always wondering what's going to happen in 3 years in Los Angeles. Now many people give me a small slip, and it's a top secret, and they say, Baba, I heard in 3 years LA is going to sink. Now tell me the truth. Just tell me the truth. If you tell me the truth, then I won't have a house here, I'll get a house somewhere else. जो सर्वव्यापकता है वही काला बन जाता है. काला यानी मौत. So kala is a limitation of time, which can also be called death. ये पंचा शक्ति उसका पंचा नियति बन जाता. So the 5 universal powers become limited, and they're called कंचुका. इसको पंच कंचुका बोलती शास्त्रों में. they're called pancha kanchukas, the 5 cloaks. ये शास्त्र का भाषा भी समझना पड़ता है. बड़ा अच्छा शास्त्र है. ये दर्शन है, ये सुनते ही दर्शन है, देखते ही दर्शन है. इसको पढ़ते ही परमात्मा को देख लेता मनुष्य, इसको सुनते ही परमात्मा को देख लेता मनुष्य. मगर सुनना पढ़ने का आना चाहिए, इसीलिए तो तुम लोग को भी इसका अभ्यास करना चाहिए. You have to इसीलिए हम शुरू कर understand दिया बुधवार दर्शन बोलना. the terms of this philosophy. As you read this philosophy, you have the darshan of God. As you hear this philosophy, you have the darshan, the vision of God. But you have to learn how to read it in that way. You have to learn how to hear about it in that way, just so that it can become much easier for you when you read it. I've started giving talks on this on every Wednesday night. इसी रीति से शिव शक्ति दरिद्र होके संसारी बन जाता. So Shiva lacks that Shakti, that power, and becomes poor, becomes worldly. अयम शक्ति दारिद्र्यो संसारी उच्चते. शक्ति दारिद्र्य होने से वो संसारी बन जाता. When you lack power, when you lack Shakti, you are called sansari, a transmigrating soul. संसार अवस्था में रहने वाला शक्ति विकास प्राप्त करने से पुनः शिव बन जाता हो. Although a person in the state of worldliness, if he acquires Shakti once again, if he expands himself, then he becomes Shiva. इसलिए सिद्ध योग वाले शक्तिपात के शक्ति विकास कर इंटेंस में पुनः शिव बनने का कोशिश कर रहे हैं. Therefore, people who do Siddha Yoga try to give the intensive so that the Shakti can be awakened, so that the Shakti can expand once again, so that once again everybody can become the Lord himself, the Lord herself, Shiva. स्वशक्ति विकास है तो शिव ही वही. जो संकोच हुआ शक्ति विकास हो गया वो शिव हो गए. Once the contracted Shakti expands, then once again you are Shiva. परमेश्वर अपने स्वतंत्र शक्ति का विस्तार करके विश्व सृष्टि करने का संकल्प से अपने को
पूर्णानंदमय से अभेद से वेद व्याप्ति का एक नमूना प्राप्त कर लेता, एक अवस्था. When God had a desire to create the world, what he did was he put aside his unity, his awareness of unity and the power of all pervasiveness, and contracted his own power and manifested this world. वेद व्याप्ति की अनेक शक्तियों को अपने से प्रकट कर देता, शक्ति अपने से प्रकट करता हूँ. Through the power of duality, he manifested all the powers from within. ऐसे होने से समाया अपने माँ शक्ति रूप इच्छा शक्ति होके दिखने वाला स्थिति को मलावृत संसार ऐसे कहते. जब वो अनंत शक्ति को प्रकट करके शक्तिमय बन जाता, तब उसको मलावृत ऐसा बोलते. When he manifests all these infinite, limited powers and creates all this, he is called Malavrita, enveloped by the impurities. ये अनवमलय जो शक्ति संकोच. So the contraction of Shakti is the Anavamala. सर्वव्यापी सर्वज्ञ रूप विभि परमात्मा अंतकरण बुद्धि और इंद्रिय रूप होके रहने से कारण इसको एक मलय, एक मलावृत हो जाता हो. अनुभव को प्राप्त होता है से माया मल बन जाता. The Lord, who is all pervasive and who is omniscient, constricts फिर से बोल himself रहे हम इसको. into the senses and the psychic instruments such as the intellect, and is called the Mayamala. I'm repeating what I said before. क्रिया शक्ति संकोच से सर्व कर्तृत्व शक्ति नाश हो के किंचित कर्तृत्व बनने से कर्मेंद्रिय आदि के द्वारा अत्यंत परिमित रूप पुण्य पाप रूप कर्म का आचरण करने वाला होने से कार्मिक मल बन जाता. When the power to act and the power of omnipotence is contracted, is limited, the karma mala comes into existence. And then by taking the form of all the organs of action, he performs actions with the idea of duality, and he performs virtuous and sinful actions. संक्षेप से कहना हो तो अपूर्ण मान्यता रूप स्थिति अनवमला, भिन्न वेद प्रथा रूप स्थिति माया मला, अपूर्ण मान्यता रूप अनवमला, भिन्न वेद प्रति माया मला. So to have the feeling I am imperfect is the anavamala. The feeling I am separate is the mayamala. शुभ अशुभ का अनुष्ठान रूप कर्म मला. The feeling I perform good and bad actions is the karma mala. ये त्रिमल से व्याप्ता आत्मा जीव काला था. When the self is enveloped by these three impurities, it is called jiva, the individual soul. यदि ऐसे त्रिमल को साफ कर दिया तो पुनः शिव बन जाता. If you wash away all these impurities, then once again you become Shiva. पुनः सर्वज्ञता, पूर्ण सर्वकर्तृत्व, पुनः पूर्णत्व, पूर्ण नित्यत्व, पुनः व्यापकत्व इसको प्राप्ति हो जाता. Then once again you obtain all those powers, the power of omniscience, the power of omnipotence, the power of eternal existence, the power of all pervasiveness, and the power of perfection. एक धोबी कपड़े धोता था. Once there was a washerman who was washing the clothes, कपड़े धोते धोते शाम हो गया. and he continued to wash the clothes, and it was evening. शाम हो गया, बराबर शाम हो गया. और एक आदमी ने ऐसा बोला, अरे अरे चलो चलो चलो, बोले संजय आ गए. चलो मैं शिवा को भी डरता नहीं, मगर संजय को बहुत डरता है, बोले शाम को मैंने अंधेर हो जाता बोलता. So evening is called Sanja. And another person said, you know, Sanja is appearing. Sanja is appearing. I'm not even afraid of a lion, but I'm afraid of this Sanja. उधर से एक नजीक एक लायन सो के सुनता, बाप रे वो संजय कौन है. There's a lion lying around there, and it heard that this person was afraid of Sanja and not of a lion. So the lion thought, who is that Sanja? अभी वो डोबी का गद्दे चराने को छोड़ा तो वो चुक गया, गद्दे ढूंढने को चला.
the washerman had let his donkey just graze around. And when he finished his work, he could not find the donkey, so he began to look for it. देखे तो उधर सोया है वो कौन लायन. So when he was looking for his donkey, he saw that the lion was there. सोचा ये संजय. So the washerman thought, that's it, this is Sanja. बाप रे आ Oh, गए God. मेरे सामने. जाके एक लात मार दिया. साला इधर आके सोया तो बोले मैं उधर उधर राह देखता. वाकु एक लात मारा. इधर सोया बोले मैं तो राह देख रहे. दो भी. So the washerman kicked the Sanja really hard and said, I have been waiting for you, for the Sanja to appear, for the evening to appear, and you just lying around here. तो लात खाया चुप और भी छोटे हो गए. When the lion was kicked, पहले तो it संजय became नाम so सुन के छोटा quiet. हुआ था. अभी एक लात का और भी छोटा हो गया. It became so quiet and it became so small. When it heard that the man was afraid of Sanja, it was wondering who Sanja was. And when it realized that this man was coming and kicking it like that, it was so scared. पकड़ा खान में ले गया उसको. So the washerman held one of his ears and dragged him home. सब धोया हुआ मैला कपड़ा उसका पीठ में डाला लादा. He put all the washed clothes on its back, और घर को ले गया and they took it home. और कपड़े उतार लिया. He got the clothes off. फिर रात को कुल्ला चरने को छोड़ देते और ऐसा छोड़ के एक लात मार दिया. चल बोले कुछ खाओ निकाल. And at night, he let it go. He said, just go and eat something, just graze around. ऐसा छोड़ दिया उसको. So he let it go. छोड़ देने से ऐसा जाते जाते एक नदी किनारे में जाके बैठा हूँ. It left, and it kept walking, and it went to a bank of a river, and it sat down on the bank of a river. बड़े चिंता से. It was so worried. फिर एक दूसरे को सिंह आया पानी पीने को तो वो मिला उसको. Another lion went there to drink water, and so it met the other lion. अरे भाई तो सिंहराज है, तू कैसे रहे ऐसे बिल्ली जैसा बैठा हो. So the other lion asked, no, you are the king of lions. Why are you sitting here like a chicken cat? अरे क्या बोलते रे तुम, वो संजय का हाथ में फंस गए. So the बहुत lion बड़ा है said, so the lion said, what can I do? I was grabbed by Sanja. I'm really paranoid now. अरे क्या संजय, वो कौन संजय है बोले. So the other lion asked, who is Sanja? अरे तुमको मालूम नहीं, वो कपड़े धोता मेरे पेट में कपड़े डाल के ले गया घर में, फिर ला के छोड़ दिया इधर हमको चरने को. बोले सुबह तक चरो, हम सुबह को जल्दी पुनः आएंगे बोलकर. The lion said, you don't know who Sanja is? Sanja is the person who washes the clothes. And he takes his washed clothes on your back. He took me home, and then he said I could go and I could graze, and he said that I had to be ready in the morning because he was going to take me again. ये देखो सुबह आते बगत करके जोर से शब्द करने वाले I am that, I am that, I am that. So the other lion said, in the morning when he comes to you, you should start roaring and roaring and roaring. You should say, I am that, I am that. ऐसा शब्द करते तो भाग जाएगा बोल. And if you do that, he will run away. देख तू मेरे जैसा सिंह है, तू उसका डोबी का कपड़े ले जाता बोल. The other lion said, you are a lion just like me. How can you carry the washerman's clothes on your back? ऐसे ही हमारे गति भी. Well, we're in the same predicament. हम ये तीन मलक के बीच में तीन मलक को छोड़ के I am that बोल के खड़े हो जाने से मलक सब हट जाता, फट जाता, किधर का किधर भाग जाता. We are covered with these three malas, and we're totally stuck in these three malas, and because of that we feel what we feel. But if we shed them off, then we'll stand up and then we'll have the experience of that. फिर तो डोबी का कपड़े का धोने से मुक्त हो जाता. Then we'll become free from carrying the washerman's clothes. इसलिए मनुष्य ध्यान और ज्ञान का जरूर है. Therefore, meditation and knowledge are so important. ज्ञान ज्ञान के लिए वो शक्तिपात का जरूर है. For meditation and knowledge, you really need the Shakti part. शक्तिपात के लिए उसमें संपूर्ण श्रेय और प्रेम और श्रद्धा और विश्वास होने का अत्यंत आवश्यक है. To receive Shakti, to receive that energy, what you really need the most
is faith, love, and full trust in परंतु that. संजय को बिना नहीं, संजय ने एक रात है और पुनः सुबह प्रातःकाल आ जाता है. Don't worry about Sanjay, it's just the dusk, you know. There will be next day and there will be morning again. Don't worry about night. इसलिए मनुष्य अपना कल्पना जाल रूप संजय में डर कर डोबी का गद्दा नहीं बनना चाहिए. You should not trap yourself in the net of your own imagination of the night and become a washerman's donkey. फिर से एक बार सबका बड़े सम्मान के साथ प्रेम से हार्दिक स्वागत. Once again, with great respect and love, I welcome you all with all my heart. Sadguru Sadgurunath Maharaj ki jai. Vitthala, Vitthala, Panduranga, Vitthala, 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 Panduranga, Vitthala, Panduranga, Vitthala, Pandharinath, Vitthala, Panduranga,
पांडुरंगा विठ्ठले पंढरीनाथ विठ्ठले पांडुरंगा विठ्ठले पंढरीनाथ विठ्ठले विठ्ठल विठ्ठले पांडुरंगा विठ्ठले विठ्ठल विठ्ठले पांडुरंगा विठ्ठले पांडुरंगा विठ्ठले पंढरीनाथ विठ्ठले पांडुरंगा विठ्ठले पंढरीनाथ विठ्ठले विठ्ठल विठ्ठले पांडुरंगा विठ्ठले विठ्ठल विठ्ठले पांडुरंगा विठ्ठले पांडुरंगा विठ्ठले पंढरीनाथ विठ्ठले पांडुरंगा विठ्ठले पंढरीनाथ
विठ्ठल विठ्ठले पांडुरंग विठ्ठले पांडुरंग विठ्ठले पंढरीनाथ विठ्ठले पांडुरंग विठ्ठले पंढरीनाथ विठ्ठले विठ्ठल विठ्ठले पांडुरंग विठ्ठले विठ्ठल विठ्ठले पांडुरंग विठ्ठले पांडुरंग विठ्ठले पंढरीनाथ विठ्ठले पांडुरंग विठ्ठले पंढरीनाथ विठ्ठले विठ्ठल विठ्ठले पांडुरंग विठ्ठले विठ्ठल विठ्ठले पांडुरंग विठ्ठले पांडुरंग विठ्ठले पंढरीनाथ विठ्ठले पांडुरंग विठ्ठले पंढरीनाथ विठ्ठले विठ्ठल विठ्ठले पांडुरंग विठ्ठले विठ्ठल विठ्ठले पांडुरंग विठ्ठले पांडुरंग विठ्ठले पंढरीनाथ विठ्ठले पांडुरंग विठ्ठले
विठ्ठल विठ्ठले पांडुरंगा विठ्ठले पांडुरंगा विठ्ठले पंढरीनाथ विठ्ठले पांडुरंगा विठ्ठले पंढरीनाथ विठ्ठले विठ्ठल विठ्ठले पांडुरंगा विठ्ठले विठ्ठल विठ्ठले पांडुरंगा विठ्ठले पांडुरंगा विठ्ठले पंढरीनाथ विठ्ठले पांडुरंगा विठ्ठले पंढरीनाथ विठ्ठले विठ्ठल विठ्ठले पांडुरंगा विठ्ठले विठ्ठल विठ्ठले पांडुरंगा विठ्ठले पांडुरंगा विठ्ठले पंढरीनाथ विठ्ठले पांडुरंगा विठ्ठले पंढरीनाथ विठ्ठले विठ्ठल विठ्ठले पांडुरंगा 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 विठ्ठले
हरिः ॐ संसमिद्युवशे वृषन्नग्ने विश्वा न्यर्या इडस्पधे समिध्यसे सनो वसून्यावर संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनासि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते समानो मन्त्रः समितिः समानि समानं मनः सचित्तमेषां समानि मन्त्रमभिमन्त्रये वः समानेन वो हविषा आजुहोमि समानि व आकूतिः समाना हृदय निवः समानमस्तु वो मनो यथा वः शुषहासति हरिः ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यतः समी हसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट सर्वोपद्रव शान्तिरस्तु। ज्योतसे ज्योत जगाव सद्गुरु ज्योतसे ज्योत जगाव मेरा अंतर मेरा मिटाव सद्गुरु ज्योतसे ज्योत जगाव Bala
सद्गुरु जो तसे जो तज्जगावो शीश झुकाया करें तेरी आरती शीश झुकाया करें तेरी आरती प्रेम असुरा बरसावो सद्गुरु जो तसे जो तज्जगावो मेरा अंतर तिमिरा मिटावो सद्गुरु जो तसे जो तज्जगावो अंतर में युग युग से सोए अंतर में युग युग से सोए चित्त शक्ति को जगावो सद्गुरु जो तसे जो तज्जगावो मेरा अंतर तिमिरा मिटावो सद्गुरु जो तसे जो तज्जगावो साक्षी ज्योत जगे हृदय में साक्षी ज्योत जगे हृदय में सो अमनार जगावो सद्गुरु जो तसे जो तज्जगावो मेरा अंतर तिमिरा मिटावो सद्गुरु जो तसे जो तज्जगावो जीवन मुक्तानंद विनाशी जीवन मुक्तानंद विनाशी चरणन शरण लगावो सद्गुरु जो तसे जो तज्जगावो मेरा अंतर तिमिरा मिटावो सद्गुरु जो तसे जो तज्जगावो जो तसे जो तज्जगावो सद्गुरु जो तसे जो तज्जगावो मेरा अंतर तिमिरा मिटावो सद्गुरु जो तसे जो तज्जगावो तसे जो तज्जगावो सद्गुरु जो तसे जो तज्जगावो मेरा अंतर तिमिरा मिटावो सद्गुरु जो तसे जो तज्जगावो त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणां त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव दुराकरो दुःख दारसभा दया करो भगवान मना मंदिर में उज्ज्वल तेरा निर्मल ज्ञान जिस घर में हो आरती शरण कमल चितला थान हरि श्रवण करे सत्य लोक से आए सब कुछ दिया आपने प्रेम करुण्या नमस्कार की प्रेम करुण जोड़ में दोनों
पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सद्गुरुनाथ महाराज की जय. So this concludes our Sunday morning satsang. Thank you all for your presence and thank you all for being here. And also I just want to offer an acknowledgement to all of our local people who continue to come each week, even when Gurudev is not in residence, and especially through the winter months, because each of us brings something to the satsang. We bring our presence, we bring our love, we bring our seeking, we bring our knowledge, we bring our companionship, and all of this stokes the fire of that which we offer here. So thank you all for being here each Sunday. It is acknowledged and it is deeply appreciated. I know that when Gurudev comes, everyone's here every single Sunday, so to continue that through the year and to be actually here even when he's not in residence is a really great tribute to our sadhana and to that which we do here. So thank you for your support. Also, I would like to make mention of the online study groups. So right now, just so everybody's aware, we have 3 online study groups happening. 2 are in Spanish, so that's with Nicheshwari. So on the last Saturday of each month, we're offering the online study group free of charge for Mexico, and also on the first Monday of the month for Argentinians and other Spanish-speaking countries. So if anybody would like to register for that, or at least gain more knowledge about when the study groups are, and also receive the Zoom link, you can contact Nicheshwari, so that for the Spanish. And then we also have Vivek's online study groups, which is happening right now. And that registration you can do at the Shanti Mandir website. Okay, so that's going to continue for some more weeks. And again, not to be missed, any of these study groups, again, they're a wonderful tool to keep us connected, even when we're at home, and something to tune into midweek, every week. It just helps keep the mind in one space, in one position. And it just adds more knowledge to the library that we already hold. So even if we've been doing this for a long, long time, they're just great vehicles that are there for us, great tools that we can continue to add to that which we already carry and to that which we already participate in. So those are the online study groups. And then I just wanted to also remind everybody that that glorious celebration of Navratra, the honoring and worshiping of the goddess, is coming up in the month of March. So March 22nd to March 30th, we'll be having that right here. We are going to have it here at the lobby area of Namaste. So for all of you who are planning to join us, it will be live streamed as well. So for all of you who are joining us live stream, and we'll be here every morning 9 to 12 for the Chandipat, every evening from 6 to 7 for the Lalita. We are going to go full bore with the evening archana, and so if anybody's interested in performing that evening archana, you can also see Nicheshwari. We'll also be having individual pujas during that time with both Prabal and Govind, and that will continue for those 9 days, and our Sunday satsang in the middle of that will be part of that. So all of the Navaratri festivities will take place right here. We'll begin our setup at the end of next week. And then moving on to understanding the Siddha path. So level 1, just a reminder to everyone, that'll start at the end of May through the middle of June. Gurudev is in residence for that, and I really, really encourage anyone and everyone to participate in that. If you have any questions, you're welcome to contact me. I would be happy to address your questions.
And if anybody needs any type of a payment plan, I'm also happy to honor that as well. And last but not least, what is it? Gurudev's visit. So that's coming up soon. And on April 14th is his arrival to the ashram. I have to look once again at the ticket to let you know about the timing and all of that, but that'll be on April 14th, arrival to the ashram here. And then on April 16th, which is Sunday Satsang, we'll have our Sunday welcome program right here at Namaste with a lovely bandara, a feast for everyone, so not to be missed. So that'll be his April 16th welcome program, so mark your calendars. And then, and just a notation too, that when Gurudev arrives here on that 16th, please come for that program, because the following Sunday, he will be on the road yatra, the yatra down south to Synchronicity. So that following Sunday, he will not be in residence. So make it a point to be here on the 16th, continue with the following Sunday, and then he'll be back on that Sunday thereafter. So with that, everyone's invited to come up for darshan, followed by lunch prasad. Today's lunch prasad is pasta and salad, so enjoy. And enjoy the rest of your week for the locals, and stay safe during the upcoming, what should we say, offering of snow. So that's going to be somewhere between Monday and Tuesday. And I'm looking forward to it, because I didn't get to see the one, I guess, 10 days ago. I missed it. So I'm kind of looking forward to that. And who knows, maybe it will be our last one before we start moving in towards the spring. So lots of love to everybody, and thank you all again for your presence and your support to Shanti Mandir. Sadhgurunad Maharaj Ki Jai.